पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अवर वडोदरा और ऐश्वर्या मैम को, दीपल मैम को, जिन्होंने इतना वंडरफुल सेमिनार का अरेंजमेंट किया है। थैंक्स मैम। आज का सेमिनार कंडक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमने ये सेमिनार अरेंज किया है? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा हर काम ऑनलाइन हो रहा है। पेंडेमिक आने के बाद एजुकेशन ऑनलाइन हो गया। आप एजुकेशन पूरा ऑनलाइन ले रहे हैं, इवन एग्जाम भी ऑनलाइन दे रहे हैं। बिजनेस में अपना पूरा काम ईमेल से इंटरनेट पे कर रहा है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो। शॉपिंग पूरा ऑनलाइन हो रहा है, सब्जी से लेके बड़े बड़े गैजेट्स, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी वगैरह सब हम ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। इवन जब सब काम करके हम थक जाते हैं तो इंटरटेनमेंट भी अभी ऑनलाइन हो गया है। हार्डली कोई थिएटर में जा रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी देख रहे हैं आप, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। कहने का मतलब, हम पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं। आप कॉलेज में आते हो, कॉलेज में पूरा काम ऑनलाइन कंप्यूटर पे करते हो, घर जाते हो, मोबाइल पे रहते हो। जो स्क्रीन टाइम हमारा 2 घंटे था, वो अभी बढ़ के 10 से 12 घंटे हो गया है। अभी मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारी नीड हो गई, कंपलसरी हो गई। हमें मोबाइल चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि आप कितनी देर के लिए मोबाइल को आपसे अलग रखते हो, नीचे रखते हो? नहीं रखते। मोबाइल हमें हाथ में ही चाहिए पूरा दिन। पूरा दिन मोबाइल हाथ में चाहिए। पहले कहते थे कि जिंदगी जीने के लिए 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। अभी मैं कहता हूं कि जिंदगी जीने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, मोबाइल और डेटा। यस और नो? डेटा हमारा 10 मिनट के लिए भी अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है जैसे आईसीयू में किसी का, पेशेंट का मास्क निकाल दिया जाए और वो जो सांस लेने के लिए जो तड़पता है, ऐसे हम लोग डेटा के लिए तड़पते हैं। ये हमारी हालत है। हम ग्रेजुएट है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ पीएचडी किए हुए हैं, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन आज भी हम लोग डिजिटल इलिटरेट हैं। यंगस्टर आपको डिजिटल सिटीजन कहा जाता है, लेकिन आपको ऑनलाइन वर्ल्ड की जो नेटिकेट है वो पता नहीं है, साइबर लॉ के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या आपके मोबाइल में आपको सेट करनी है, इंटरनेट पे क्या हार्डली नोज एनीवन। तो आज हम जानेंगे कि आपको क्या प्राइवेसी रखनी है, क्या सेटिंग रखनी है आपके मोबाइल पे, आपको किसको फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना है, सोशल मीडिया पे क्या प्रिकॉशन लेने हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। और हम ये जानेंगे कि अगर किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली साइबर क्राइम हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ कंप्लेन लिखवानी है, ये किसी को पता नहीं होता है। जब साइबर क्राइम होता है तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ। कहाँ जाना है, किसको मिलूं, किससे बात करूं, तो ये आज हम जानेंगे क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट साइबर क्राइम। क्राइम यानी कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो सोसाइटी के अगेंस्ट में है, लॉ के अगेंस्ट है, उसे क्राइम कहा जाता है। अगर यही क्राइम हम इंटरनेट, मोबाइल, लेटेस्ट गैजेट्स, नेटवर्क, टैबलेट से अगर क्राइम करते हैं तो उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम यानी हाईटेक क्राइम भी कहा जाता है, कंप्यूटर क्राइम है, एंड इट इज बॉर्डरलेस, कि कोई सीमा नहीं है। आप कहीं से भी क्राइम कर सकते हो, किसी के साथ भी क्राइम कर सकते हो। यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में किसी के साथ क्राइम कर सकते हो, यूपी में अगर कोई बंदा बैठा है तो आपके साथ यहाँ क्राइम कर सकता है। किसी के साथ भी कहीं भी क्राइम हो जाता है, बॉर्डरलेस क्राइम है। नेक्स्ट, डिजिटल फुटप्रिंट इन द वर्चुअल वर्ल्ड, आई डील इट विथ इन एवरी डे। देखिए,
आप लोग क्राइम से रिलेटेड सीरीज देखते होंगे, क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया। आप देखते होंगे अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस आती है और पुलिस क्या करती है, फोरेंसिक को बुलाती है। फोरेंसिक के लोग जो आते हैं वो वहां से एविडेंस इकट्ठे करते हैं। क्या एविडेंस इकट्ठे करते हैं? ब्लड स्टेन, फिंगरप्रिंट, नाखून, स्किन, हेयर, ये सब इकट्ठे करते हैं क्राइम को सोल्व करने के लिए। जब ऑनलाइन क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है? एविडेंस इकट्ठे करता है। वो क्या होते हैं? आपका आईपी एड्रेस, आपका लोकेशन, आपने क्या सर्च किया है, कौन सी वेबसाइट ओपन की है, कौन सी लिंक भेजी है, ये सब चीजें इकट्ठी करके उसको क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये सब जो इकट्ठा किया जाता है उसे डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। आप पूरा दिन जो भी ऑनलाइन कर रहे हो ना, कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हो, कोई भी लिंक ओपन कर रहे हो, किसी के साथ भी चैटिंग कर रहे हो, फोटो किसी को सेंड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, वीडियो शेयर कर रहे हो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। हर चीज का रिकॉर्ड हो जाता है और आप उस डिजिटल प्रिंट को फुटप्रिंट को डिलीट नहीं कर सकते। मैं अपने पास के बारे में बताऊं, जब मैं छोटा था, स्कूल में नाटकों में पार्टिसिपेट करता था, प्ले में, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, बट नो वन नोज अबाउट इट। देयर इज नो फुटप्रिंट ऑफ माय पास्ट व्हिच यू सीक ऑन ऑनलाइन। बट टुडे माय चाइल्ड फर्स्ट डे at school, mother clicks pic, there is a vital information on iCard of the child and that picture goes online. क्या उसे मैं रिमूव कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ? नो, यू कैन नॉट डिलीट दैट पिक्चर। दिस वे वी create tons of digital footprints every minute. Digital footprint in the form of location, digital footprint in the form of information, digital footprint in the form of sensitive information. We create lot of footprints and you cannot remove your footprints, digital footprints. Even आप ये पास करके, पासिंग आउट होके जब किसी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो वो क्या करेंगे, आप डिजिटल फुटप्रिंट को सर्च करना शुरू कर देंगे। हाउ डू? दे यूज ओपन सोर्स इंटेलिजेंट टूल्स। You apply in my company, I checked your resume and I got your email ID and mobile number from your resume and start open source intelligence to search your digital footprint. आपने क्या पोस्ट किया है, किसको फॉलो कर रहे हैं आप, किसको कमेंट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कौन है, ये सब मैं देखूंगा। अगर मुझे लगा कहीं भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपने शेयर किया है जो कम्युनल हार्मनी जो डिस्टर्ब कर रही है, किसी सोसाइटी अगेंस्ट में है, किसी के इमोशन को हर्ट कर रहा है, तो मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप सोचिए कि आप डिजिटल फुटप्रिंट कितने इंपॉर्टेंट है, वो डिलीट नहीं कर सकते आप। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फोटो क्लिक करता हूँ मोबाइल में, उसे डिलीट कर देता हूँ, इवन मैं अपना मोबाइल भी फॉर्मेटेड कर देता हूँ। इज दैट पिक्चर रिमूव? क्या वो डिलीट हो जाएगी? नहीं होगी। दैट पिक्चर गोज ऑन दी क्लाउड। इफ somebody hacks my cloud, he can access all my private information. Today, my youngster sail in a ship. Which ship? Relationship. And there is a hole in that ship. That is breakup. And as you know, टाइटैनिक डूब जाती है, आपकी शिप भी डूब जाती है। Then children start complaining that someone is blackmailing me with my personal content. ठीक है? Yes or no? Today, I'm in the 10th, fun, freaky boy. I post all type of post with a can and blah, 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 all naughty stuffs. After 10 years, I joined an organization where I am appointed as a senior vice president. And on the first day of my welcome party, all are in
कॉन्फ्रेंस रूम एंड दैट पिक्चर गोज ऑन द स्क्रीन. अब सोचिए मेरी क्या हालत होगी. तो हम कैसे कंट्रोल करें इसको? आई ऑलवेज से अबाउट द प्राइवेसी. प्राइवेसी especially in this era of data explosion where everything is online. That day I'm talking with a friend in a car. Hey, listen, I'm going to change my car next. मैं घर जाता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वही कार की एड मुझे दिखाई देती है. Hello everyone. I'm doing this for the first time, so please bear with me. Also, I will not bore you a lot. Uh, so, thank you for joining us first of all today. And I'm going to be one of those many people who's going to lecture you on social media yet again. I'm really sorry, but I do come from that generation where it was born. I'm from the Norkut era, and Facebook was rising, and Insta was a cool app where there were photos. Snapchat used to be fun, and also I still cringe on TikTok videos. I will never get the video concept and कैसे वो चल रहा है, ठीक है? But how do I qualify for speaking about it? So my personal followers are only 400, but I work for a company that has 641K reach in the city itself. You all are aware of Ourvadodara, right? Okay, I know you might have some complaints, but I'll share you some insights. What we have, I'm working there for 3 years, and I'll share some insights that how we function there and how we try to sensitize the information. Okay, now as we know, social media is not the one of the nicest place to be. At some point in your life, everyone might have faced some kind of a dark side of it. I guess you all agree. Everyone might have had some kind of an information that triggered you at some point. Okay, so when I talk about social media, for me it was like very new, but I had to closely analyze it when it comes to it because it's part of my job. Okay, so I'll share you a few examples that have came through like my 3 years in Vadodara. There's this, we are all familiar with WhatsApp forward classes or WhatsApp universities. This is some slang that we used. I know mainly not millennials, but our parents are someone who keeps on forwarding things on WhatsApp. Then also meme culture, meme marketing. Meme marketing, सबको पता ही होगा ना? Okay. Then there's viral culture. Everyone wants to get viral. आई गेट लाइक आर वडोदरा पे हमको दिन में ना 10 से 12 फोटोग्राफ्स या वीडियोस मिलते हैं जिनको वायरल होना होता है एंड इट मेक्स नो सेंस honestly when you have that kind of platform and when you have so many information coming in, it becomes very difficult to see what is authentic and what is not. So I'll try. I speak on the behalf of marketing when it comes to our Vadodara. So we have this one policy when it comes to missing people's complaint. Now we had 3 से 4 बार ऐसे किसी ने हमको मैसेज किया था and I know a particular incident where a guy called me randomly and he's like, my baby sister is missing. Being a female and being 26, high on maternal instincts, I thought that I have there's a baby there's out there. But we have a policy that we follow very strictly that you will have to email us the FIR copy with the name and number and with the identification that you can share us. We did wait for it. I tried following up with the people who were there and who contacted us. And later on, we got to know it was a neighborly feud, and a guy was trying to harass the family, and that was very sad. Next is that we also have a lot of this is something that I face on daily basis, that we get a lot of pictures of accidents and which are very sensitive. Never forward those pictures directly. We anyway get the news about it, but then when you open a DM, when it's in request box,
When you open it and there's a picture, I actually, my phone fell from my hand because of it. So because it was not sensitized. And also I feel that somewhere it is our duty as well to sensitize it before sending it to anyone or anyone out there. uh, does anyone know what is disinformation? Anyone? I know that you might know what is misinformation. Okay, I'll put it in a very short term. आधा सच झूठ के बराबर होता है. ठीक है, when you are sharing something, especially meme culture or meme pages that I know, they share one perspective of the information and it becomes completely different when you are interpreting. So if as a person I'm seeing something on a page and when there is one information and the other perspective is not shown, it goes on multiplying and it goes on forwarding and it just keeps on spiraling and it will never go back. Now I'll share about Twitter. So, how many of you in the morning go like morning? That's what I do, but I feel that everyone else might also do as everyone here is Generation Z, right? So you might know hashtag culture and Twitter पे trending होता है. तो last year hashtag श्वेता बहुत famous हुई थी. याद है? Everyone was laughing. I have a Shweta in my office too. So, uh, why did she fell into this kind of trouble? I know it was not deliberately done. When she was just gossiping with a friend, which we all do as a guilty pleasure, and everyone does it, regardless men, women. It is not gendered. I'm sorry. सो हाउ मेनी ऑफ यू मतलब वो बस अपना जूम कॉल का जो बटन था ना जिसमें म्यूट करना होता है वो भूल गई थी. एंड 111 में से आई रिमेंबर 111 लोगों ने सुना था. 111 में से एक इंसान ने उसको वायरल कर दिया. अब हमको भी नहीं पता वो पंडित जी का क्या हुआ, बट everyone was so invested and somewhere we are laughing at right now, but somewhere it is a breach of privacy, I guess. Yes, right. And if that guy might have reported it, the person might have actually be behind the bars. We also had a case in our office itself. As a woman, someone called us because of our work offline. There was a journalist who got a call out of some feud. I don't know about it. And that guy he called us and he started speaking badly in bad language. And I'm not comfortable sharing what he said. We, within an hour, we actually took cybercrime and we actually reported him. After a month, we got a hold of him and he was a 17-year-old minor boy who did this. Why such rage? I mean, Dr. Deepal already has said, why such rage? When you are on social media, as I'm telling as a 26-year-old, and I've always followed it, there should be only two principles. One is do good for your own feed and be good to others' feed. No matter what. If you cannot say something good, please do not say something bad. I guess, during pandemic, we already knew how social media and digital technology was essential for our survival. If you're going out there, if there was no social media back then, we would have been stuck somewhere. Schools became digital, work became digital, and it was mostly impossible without of it कि अगर हम कुछ function कर पाएंगे. So please try to be kind when you are on social media. Okay, now I'm trying. This is my personal favorite topic. That is online dating. How many of you are on online dating apps? Don't be shy. It's fine. No one. Really? यहाँ पे age group क्या है? You all are lying. If I find anyone from this audience, I'm going to share the screenshots. Ma'am, these are my students and they are very smart. They won't say like this in public at least. Okay. Okay. I thought, where's it? It's fine. Just a joke. But whenever you are online dating, and I'm saying this out of 7 years of experience. Okay. Yes, 7 years of experience.
whenever you find anything that is suspicious, and I know that many people might have found it, please do not only block that person but also report that person, because these apps are actually, internet was very different in 1900s, it was very different yesterday, it is growing with time, and also the support we have is growing with time, I guess. We also have many helpline within the apps, also you have in the college itself, also you have it outside as well. So whenever you find something, please report that thing. Anything that has sexual explicit content on any platform, including any minor or without any minor, or it might have just triggered you, please report that person right away for a better serving. I know that social media is bad at some point, but I feel it's almost impossible to eradicate it completely out of our lives. It's here to stay and it is going to be permanent. So whenever you are on it, let's try to make it something good out of it. As Deepal ma'am has already said before, I guess as my personal experience, I would say I've learned a lot from social media. Whether it was making dalgona coffee, everyone might have tried it, to crazy hacks. You know about cultures about many people. You know how you get news. Like my job is basically sharing you what is happening in Vadodara, and you get it through just one click. So it's here to stay. Why not? Let's make it a good technology. And I feel that maybe the generation that comes after us or before us, it's tough, but with us also, it is a very different change, because from television, we completely changed into a smaller device and we still cannot make the change out of it. But with the generation which is coming right now, it might help us a lot. Please be cautious, please be conscious whatever you're putting out, because as everyone and every expert here said, that once it is on the internet, it is here to stay, it will not go away. Next point would be कि, have anyone heard about this was a case which I actually read on a Paytm scam that happened during lockdown. A person who was posing as an army official, and he actually duped lot many people just by saying, so, trying to sell illegal alcohol, and that happened in the city itself, just because they shared their OTP, just because. And one guy, it happened on the social media, on his Instagram itself. Please ask as many as questions you want. Two-factor notification, already everyone has said before, please आप two-factor notification on rakhiye. Ask as many as questions you want to ask the other person. I know we are in generation where we want to connect to more people beyond our communities. I have met mostly my all of my friends online, honestly. And it does have this, whenever I'm meeting or whenever I get a new friend request, I only have one question and one dialogue: सावधान रहे, सतर्क रहे. Thanks to Anup Soni for that. But it is needed. Connect to people, no matter what you do. It's here, it's for us. Connect more people. And it is good to be with other people, because कोरोना में हमको ये तो पता चल गया, घर कोई नहीं बैठ सकता है. No matter what we do, स्विमिंग पूल में जाके कूदने का जो मजा है ना, वो वीआर में नहीं आएगा. So ask many questions you want to ask. Also, when you're connecting online, please make sure कि आप पहले वीडियो कॉल पे मिले, ठीक है, एंड उसके बाद उनसे रियल लाइफ में अगर मिलना है तो पहले पब्लिक जगह पे मिले. Okay, I am not in favor of illegal stalking, but a little background check on profile won't hurt anyone. When you're connecting anyone online, please try to, verify that whatever they are telling is actually the same in their feed, because nowadays everyone is sharing everything. If I'm saying right now that I work for Ourvadodara, and अगर मेरे profile पे कुछ और दिख रहा है, तो it doesn't make any sense. Everyone will ask me कि अरे ये क्यों अलग है, वैसा है. Personally मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, and I took care of it and I reported that account.
there was one guy who and I have a private account. एक बंदे ने मुझे मैसेज किया and he's like, I want to sell your photographs and I'll give you 20% commission. ठीक है. I do mostly my photographs are selfie and I would want to know who wants my photographs in their home or want to buy them. It's basically duck face. But then I was like, "Okay, where are you from?" But then I there's a ring that bell rings behind your head. कि no, you should not talk to him. And turns out वो 2 दिन में वो मैंने जैसे इसको report किया, the Instagram account was bought down. And I got an email. So be cautious, be conscious, whatever you're posting there. And main चीज यही है, be kind and be safe. Welcome everyone to this session. I'm Dr. Deepal Patel and we are planning to talk about the psychological effects towards cybercrime. Forget cybercrime. Let me know, कब आपने दिमाग यूज किया था? याद नहीं है शायद? Because everything that we do, we are so mechanical in our behavior, so addictive in our behavior. Have you tried watching reels on internet? You start watching it at around 9:30 p.m. 11 कैसे बज जाते पता नहीं चलता, watching some nonsense. Okay, so you start watching something really sensible. Last में रात को 1:30 बजे मैं खुद 5 minutes craft देख रही हूँ of how to survive in a jungle. I don't know why do I need that. But that's what social media does. That's what internet does to us. Okay, now even, when we think of it, I don't remember when was the last time we started logically thinking and critically analyzing something, any aspect of our behavior. I'll give you one simple example. Even when we end up falling in love, what we do is we write a love letter, एक heart बनाएंगे, एक arrow डालेंगे बीच में से, इधर मेरा नाम, इधर boyfriend का नाम, I love you. Why do we draw a heart? डैडी करते थे, दादा करते थे, मैं भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ पता नहीं. We started using like दिल 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 विल प्यार व्यार, हम दिल दे चुके, हम कितना सारा दिल है यार. But you know what, when you fall in love, the oxytocin tampers, serotonin, dopamine, oxytocin, these are all neurotransmitters which is somewhere here in your head. What is heart? It's a pumping machine. Come on, 8th standard to sab padhe. Heart is just a pumping machine. It regulates blood flow. But हमने वो भी दिमाग यूज नहीं किया. You want to see a live example? Just check during February, during this Valentine's week, red day, blue day, purple day, हम heart-shaped pillows, heart-shaped cards, heart-shaped this, heart-shaped. Why do we give all that? And forget heart, we give a teddy bear. Teddy bear, seriously, bhalu, it's a wild animal, god damn it. Just imagine if I love someone and I can tell him, you know what, I love you, ye pakad ajgar. Kaisa lagega? Do we use our brain? Even for social media, I wish we were a little more social on social media. कितना गुस्सा है लोगों में, कितना फ्रस्ट्रेशन है. एक 6 महीने के बच्चे का फोटो डालेंगे ना, वहां भी कमेंट सेक्शन में जाओ, कोई भी रैंडम वीडियो उठा लो इंटरनेट पे, गो टू द कमेंट सेक्शन, गाली भरपूर, कहाँ का गुस्सा निकाल रहे पता नहीं. और इतना सारा anonymity है कि it is very simple for us to put all our frustration on internet. How okay is that behavior? I don't know. Okay, the way we behave, so different. People keep saying, problems बढ़ गई है, problems बढ़ गई है. I always keep saying this, problems नहीं बढ़ी, हमारी tolerance कम हो गई है. Look at the way we behave on internet. Just check about the cybercrime ratio. Even when you fall in love, we are not living the moment. We are busy recording the moment. आप कहीं घूमने भी जाते हो, कितने लोग घूमने के लिए नहीं जा रहे, वो इसलिए जा रहे क्योंकि वहां पिक्चर्स अच्छी आती है. I wonder if you've tasted anything in Taste of Vadodara. It was just because we were busy taking pictures there. We take so many pictures. हम तो relationship में भी कितना ज्यादा, मतलब नहीं चल किस कर फोटो लेते, चल तू किस कर, नहीं तू मेरे को प्यार ही नहीं करती जा. ये क्या बिहेवियर हुआ? ऐसे कौन से गजनी है हम? कितने रिलेशनशिप है कि सुबह उठ के याद नहीं रहता है कि कल रात को किसको किस किया था. The only thing is, keep your behavior in control. Okay, keep your online behavior also in control. हम साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, इतना जल्दी कोई भी एक ऐप डाउनलोड करेंगे, 100 रुपए डालो 200 आएंगे, 200 डालो 500 आएंगे. You end up putting so much money there. Do you know who's sitting on that side?
Parents have no clue what's going in your online life. Okay, and then we end up going for, different kind of like kuch addiction ho gaya hai, हमको drug withdrawal symptoms हो गए हैं, there's so much of suicidal tendency because थोड़ा भी problem हुआ ना life में, the first thought that we get is कि यार मेरे को तो जीना ही नहीं है यार, no life no problem. ये कहाँ से ideas आ रहे पता नहीं. Okay, and Google भी इतना शाना है that the moment you ask कि I don't feel like living anymore, मुझे मरने की इच्छा हो रही है, Google पलट के पूछता है painful painless कैसे मर, अरे भाई मत मर ऐसा कौन बोलेगा. And we are just not bothered. Just have limited friends. Online friends don't count. The problem with social media, the entire cyber world is that you feel everybody is having a blast, everybody is having a party, and only I am the one suffering. Which is not the case. Everybody is fighting their own battles. Some people talk about it, some people cry about it. But everybody is fighting their own battles. We don't give a damn about it. हमारा काम क्या है? हम रात को बैठे बैठे इंस्टा देख रहे, फेसबुक देख रहे, and we feel that everybody is happy. क्योंकि वहां कोई दुखी है ही नहीं. आपने देखा कैसे कैसे डालते हैं पिक्चर्स लोग कि रात को हमको डिप्रेशन हो जाता है कि यार सब लोग कितना अचीव कर रहे हैं लाइफ में. ठीक है, रात को सोते टाइम आर वडोदरा की 3-4 पोस्ट देखते तो लगता है पूरा बड़ोड़ा पार्टी कर रहा है, मैं अकेली रह गई हूँ, इतने बिजी है. यू चेक पारुल यूनिवर्सिटी का पेज, यू चेक आर वडोदरा, एंड आई थिंक यार मैं पूरा दिन ऑफिस में किया क्या मैंने. सो वी आर सो बिजी एनालाइजिंग पीपल्स लाइफ. एक तो आधा समझ नहीं आता है कि हम दुखी अपने दुख से है कि दूसरों के सुख से है. कि बाजू वाले को ज्यादा अच्छा हो गया तो भी हमको ऐसा लगता है ना कि यार ये कैसे जा रहा है इतना स्पीड में, हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं. So moral of the story, keep the keys of your happiness in your own pocket. Okay, that will be so helpful. If you can just practice that little thing. Okay, and just try to detach for some time from the online world and take charge of your own behavior because we become so aggressive. हम तो इतने aggressive हो गए कि 2 दोस्त आगे चलते और 3 पीछे चलते हैं तो हम गाली देके बुलाते हो. कहाँ का गुस्सा ला रहे हो और क्यों इतना गुस्सा. And why is it coming? Because bachpan se, the games that we are playing, even if you go to the game zone, sir, all the games are so much so aggressive that you end up provoking people. वो हथौड़ा मारो जोर से वो जाएगा, कैसी कैसी गेम्स है. You get so aggressive in the games also. हमारी गेम्स ले लो, सोशल मीडिया ले लो, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, हर जगह इतना गुस्सा है. ये फ्रस्ट्रेशन ना अगर आप एक दोस्त भी बनाओ and try to share things with them. I'd also like to take this opportunity to let you people know that anybody who's not having the Your Dost app, please download it now because we have more than 1200 counselors there, all proficient with different languages because we understand dukh, sukh, gussa, gali, pyar, mother tongue mein best nikalta hai. Okay, so please make use of that. If you are going through something or if you're suffering, please ensure that you're talking to a professional person, a psychologist. और अगर psychologist नहीं है कोई बात नहीं, कोई दोस्ती ढूंढो, but कितने भी online 1000 दोस्त होंगे वो काम नहीं आएंगे. एटलीस्ट डिटैच होके कोई एक नॉर्मल दुनिया में नॉर्मल दोस्त रखो बिकॉज तुमको पता ही नहीं है सामने वाला ऑनलाइन में है कौन. एंड एवरीथिंग इनिशियली साउंड्स रियली नाइस, बी इट लव अफेयर, बी इट एनीथिंग. एंड द अमाउंट ऑफ पिक्चर्स दैट वी क्लिक, थोड़ा वो भी हम लिमिट में रखेंगे, अच्छा रहेगा. बिकॉज रिलेशनशिप की गारंटी नहीं है, बट द वे सर सेड वो पिक्चर्स रह जाते हैं. एंड ऑल दीज पिक्चर्स आर सोर्सेज ऑफ डिप्रेशन. ओके, हम आपको ठीक कर सकते हैं, हम डिप्रेशन ठीक कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग ठीक कर सकते हैं, बट वो इंटरनेट से पिक्चर्स निकालना इज सो टफ. So why unnecessary create content and put it online when it's going to be difficult to erase that? Clear? All right, we'll continue again. Before that, if sir is ready, let's take this opportunity to talk to sir. I'm always here in the campus. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Parul University, PU. Our Vadodara, respected Motwani sir, Dipal ma'am, and the beautiful guys and that handsome public. First of all, the cybercrime. Here, the one definition of cybercrime is that every internet connected gadgets, whether it is mobile, whether it is laptop, whether it is smart home or anything, whether it is car,
but that all internet connected devices. Now I think that you are belongs to the medical field. Am I right? Mixed. Okay. So that those who are related to the medical field, they have the one more challenge, that is robotics operations. So, dear friends, every day we have the lots of challenges in the cyber world, and that all internet connected gadgets or objects are the part of cyber world. Respected Motwani sir delivered the very handsome speech, and in his speech he delivered the good concept of digital footprint. And the Deepal madam added one more thing about the content. But one thing that to be the cleared, there is no delete button on the internet. There is no delete button on the internet. I'm sharing the one story, very little bit story, 2-minute story. In the college time, there are so many friends are visiting many places. During that, the photography session is also there. And that the one girl taken the photo with his boyfriend and then deleted the content after a few years. After 8 years, that the same photo found by her husband on the internet. And then what was happening? Relationship was breakdown. And it is ended by divorce. So any digital footprint of yours may disturb of your future life. That is true. And there are so many cases we face. In my 12 years of journey, Motwani sir is most respected because from 2004 he is handling these cybercrime cases. I am from 2010. So he is knowing very well about that things, and only we have very good person in the seminar because he has having that all good modus operandi, or he is knowing the all modus operandi of cyber criminals since 2004 to till 2022. Please give a big hand to the Motwani sir. Thank you guys, thank you. So I am coming on. First slide please. Yes, this is the message. Here in the message, I erase the number, and are you all handsome guys? You are receiving the message from the beautiful girl. Hello, just nothing. And we are like a year. And if I found Babita is messaging me, then I am becoming most happy on that the same day because Babita is messaging. And that the same thing is happening. Now I am coming on technical aspect. Once you receive the message from unknown number, don't reply before any investigation. How to investigate, I am showing you. There is DP. In the DP, there is one picture. Whether it is real world or dark world. What is behind the dark world? We don't know. That the Deepal madam explained in her speech, sorry. But what was in the dark side? That no. How do we know? How do I get an idea about this picture? Reality of the picture that I am showing you. It's quite easy. Quite easy. And this is 3 or 4 minutes time to take to identify the object. 3 or 4. Next slide, please. The name written, Nisha Gupta. If you are just clicking on the object or DP or on the number, you get the name of the object, name of the person, Nisha Gupta. Now, what to do? Whenever you receive, here I am showing you the one example, lady example. It is happening with the lady also. And lady received the message on her mobile regarding the one person who is sitting in the different country or different continent, and then
is trying to establish the friendship. Now, what is happening? Whatever the desire we have, if it does not get fulfilled, then we definitely dump into this kind of cyber attack. And we lost our mind control, we lost our patience, we lost our emotions, and we connected with this fellow. We are not knowing very much. Now, once you download this image, if you don't get the downloaded option, sometimes some application does not allow you to download or that they're taking the screenshot. So take the another mobile, take the picture, and then go on the next, please. I downloaded that picture and then I go on the certain tools to identify the object. Where do this photo or where do I find this photo? On which platform that photo is available? And then similar images. There are so many tools more than advanced than the Google reverse search. More than advanced than the Google reverse image search. Okay. So I found the image. See, that was the first image that I found on the DP. That is the second image. That is a similar image that I found during my browsing activity. There are two types of browsing, normal browsing and advanced browsing. I always prefer the advanced browsing. How to browse advanced way that I am showing you. Okay, next please. Here it is written in the Indonesian language. Temkun Vanita Baru Idi in India Untuk Backend Wedge. It is written on that website. It is Indonesian language and that written in the Indonesians and that website promoting the dating sites. And here, if you want the dating girl in India, then we provide you. This is the translation of this Indonesian language. So, I found that photo over there. Okay, then I further investigated about the photo. Then that I came to know this girl belongs to the Indonesia and she is providing the dating services in the India on the different zone. And now you are receiving the message on your phone. And then the girl suddenly offered you, or that if the girl is not there, the man is there, then they offer you about that gift. Okay, second thing, creating the emotional touch with your activities, carrying you, and then knowing the each and every aspect of your life, and then trap into the this kind of cybercrime. So, if you receive any kind of message from any unknown number, that is your first practice. Don't answer it, block it, report it, and then identify about the object. That is your real practice, and not this knowledge you keep in your mind or with your territory or limit, but you deliver to everyone who are not presenting in the seminar. Because Joe Biden addressed the nation there in his speech, he delivered the message in the entire world to fight with the cybercrime. That is only the one method, that is cyber awareness, and that the PU and Ourvadodara is doing. And so we are very big applause to them. So you are doing such a good activity to aware yourself. So by that way you can identify the tools. The tools are open source tools and are available easily on the internet. Then I am in the next slide showing you the tool name. The first is Yandex. First name is what? Note down this whole name, otherwise click it. Or that slide is over here at Parul. So I am requesting, please deliver to everyone. Yandex, Tinai, Google reverse image search. But the most powerful tool is what? Yandex. And if you browse the Yandex, there you have the Google Lens. There you have the Google Lens option device on your Android device. So scan the photo with the Google Lens and then visit the Yandex, or that download the image and then find out. You get the perfect result. Either you get it from the Yandex or Tinai, and then last one, that is what? Google reverse image search. But Google is very limited. Google is what? Google is very powerful search engine. But sometimes in my 12 years of practice, I found that there are some doctorate method that the Google official use. So we don't get the exact
output sometimes. So my recommendation is that go through the Yandex, Tina, and then Google reverse image search. That would be the better way to find out the exact object. That the same way, I solved the one case that I'm sharing. 19 जनवरी को एक लड़की की शादी अमेरिका में तय हुई थी. वो लोग ट्रैवल करने वाले थे जनवरी 1 को अमेरिका के लिए, न्यूयॉर्क के लिए. मेरे पास इनविटेशन आया. मेरे दोस्त ने बोला कि तुम जरा देख लो इसकी प्रोफाइल कैसी है, ये इंजीनियर है, वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये बहुत अच्छा तेरे फील्ड का है, तो तुम देख लो इसकी प्रोफाइल, काम लगेगा. तो मैंने वो प्रोफाइल चेक की. तो मैंने ये यांडेक्स से फाइंड आउट किया कि वो गे कम्युनिटी की रैली में था. और 2 दफा मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये गे कम्युनिटी की रैली में क्या कर रहा है ये बंदा. फिर मैंने उनको बोला कि दिस इज द एविडेंस विच आई हैव फाउंड, एंड प्लीज वेरीफाई बिफोर डूइंग एनीथिंग. एंड फिर उन्होंने मेडिकल करवाया वहां पे अमेरिका में. एंड देन दैट द पेरेंट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन केम टू नो कि भाई ऐसा हुआ है. और फिर ये शादी खत्म हो गई. अखबार में भी आया था, 2 दिन चला था. अभी कल का इंसिडेंस देख लो. 6 साल के बाद बीबी को पता चला कि उसने जेंडर चेंज करवाया है. अब देखो, दैट इज हैपनिंग ऑन द सोशल मीडिया. एज अ प्रैक्टिसिंग साइबर एक्सपर्ट, अभी लोग कुंडली मैच करने नहीं आते, साइबर कुंडली देखने के लिए मेरे पास आते हैं. दे आर कमिंग फॉर द ऑब्जर्विंग द साइबर कुंडली. और आप एक चीज, अभी डिपल मैडम ने बोला कि यू दैट अभी के ये टाइम पे रिलेशनशिप दैट इज द कॉमन थिंग, बट डू नॉट डू द वन थिंग. डोंट एंटर any of others email address, any of others login ID, login credential in your device. If you may enter, then it is also the disadvantage for you, and it is the bad, you are creating the digital footprint very bad way. अभी रिलेशनशिप में क्या होता है, ट्रस्ट नहीं होता है, तो रिलेशनशिप क्यों रखते हो. अभी कोरोना के टाइम पे 61 इयर्स की लेडी मेरे पास आई. मैं को बोले आपको क्या काम है. मुझे आइडेंटिफाई करना है. क्या आइडेंटिफाई करना है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मोबाइल लेके वॉशरूम में जाते हैं और 15 मिनट के बाद बाहर आते हैं. अभी मुझे ये देखना है कि वो 15 मिनट अंदर जाके क्या करते हैं. तो मैंने बोला कि आप भी अंदर चले जाओ. आपको किसने मना किया. तो वो लोग बोले कि आप मजाक मत करो, यू टेक इट सीरियसली. सो is there any tool to find out कि what is happening? Listen, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो इंटरनेट पे ये सर्विस मुहैया कराते हैं. दे आर प्रोवाइडिंग द चार्जेबल सर्विस. दे आर चार्जिंग द 2000 रुपीज, एंड ड्यू टू दैट योर व्हाट्सएप चैट, योर स्नैपचैट चैट इज नॉट प्रोटेक्टेड. वहां पे लिखा होता है इट्स अ वन काइंड ऑफ एंड टू एंड एनक्रिप्शन. Encryption means what? The message is getting delivered from one device to the another. It is in the encrypted format. Encrypted format means in the non-readable format. No one can read it. तो आप सोचो 2012 की चैट सुशांत के मर्डर के बाद कैसे बाहर आई थी. अगर एनक्रिप्टेड ही होती है तो बाहर कैसे आती है. यू थिंक दैट थिंग. इट इज अ फोरेंसिक साइड एंड इट इज नॉट द प्रॉपर एनक्रिप्शन. वी आर नॉट अंडर द प्रॉपर एनक्रिप्शन. So it is only for the saying it is encryption, but it is not encryption. And what is encryption? Those who are belongs to the Gujarati community. How many of you are belongs to the Gujarati family? Fine. So you are knowing that this language. गुजराती में बे लेडी बात करे ने केवी रीते बात करे. ऐश्वर्या जी आपको भी थोड़ा गुजराती तो पता होगा, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा. नहीं पता चलेगा तो कुछ बात नहीं, पूछ लेना आप. मगर क्या है केवू छे तो एनी जगह पर पूछसे केस में હું છેસ में સાસ મારું છેસ में ना તાસ મારું નામ સ્માન શું હું છેસ में like sma, then another akkad bakkad. Okay, these are all the languages that we are utilizing since 1000 years ago, and that is the real encryption. वो एनक्रिप्शन रियल है. ये लोग एनक्रिप्शन की उनको डेफिनेशन ही पता नहीं हो. एनीसन टाइम पे क्या होता था, इफ यू विजिटेड द फोर्ट, अभी बड़ौदा म्यूजियम में चले जाओ, वहां पे एक लेटर लिखा हुआ है. वो लेटर पे आप देखोगे तो रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो रेड कलर में है. तो पहले कैसे लिखते थे, एनक्रिप्टेड मैसेज भेजना. इफ आई वांटेड टू सेंड एनक्रिप्टेड मैसेज, हाउ डू आई सेंड एनक्रिप्टेड मैसेज?
just I have to write on the silk paper, silk page or silk like cloth with the help of lemon water. लेमन वाटर से मैं उसके ऊपर लिखता हूं और ड्राई हो जाने के बाद मैं उसको फोल्ड करके भेज देता हूं. जो भी बंदा रिसीव करता है उसको रिसीव करने के बाद उसको फ्लेम के ऊपर से थोड़ा ऐसे मूव करना है और फिर जो लिखा हुआ अक्षर जो है ऊपर आ जाता है. दैट इज रियल मीन ऑफ एनक्रिप्शन. रियल मीन ऑफ एनक्रिप्शन. तो एनिसन टाइम से ये चली आई हमारी ट्रेडिशन है और ये ब्राइन एक्टन बोलते हैं व्हाट्सएप वाले कि ये हमने ढूंढा, हमारी टेक्नोलॉजी थी, उन लोगों ने एडॉप्ट की है. और वो लोग दे आर नॉट द डिजाइनर, वी आर द डिजाइनर. आवर एनिसेंट पीपल डिजाइन दैट टेक्निक एंड डिलीवर टू द एवरी एंटायर वर्ल्ड. ओके, सो always be aware about this all such a thing. Don't enter anyone's email address, anyone's login credential in your device. अदरवाइज फंसोगे आप, क्योंकि आपका आईपी वहां पे है, आपका IMEI वहां पे है, आपकी ISP वहां पे है. सही है. और जो इन लोगों ने, सर ने और मैडम ने बोला, उसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं. गूगल योरसेल्फ. गूगल योरसेल्फ. गूगल पे आपका नाम लिखो, फाइंड आउट करो. क्या फाइंड करना है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है, हाउ मेनी वेबसाइट शोइंग योर नेम, शोइंग योर फोटो, एंड दैट इज इन योर वे यू कैन डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम देयर. यू आस्क द गूगल कि आप ये यहां से डिलीट करो. गूगल को डिलीट करना पड़ेगा. 30 डेज में गूगल डिलीट करता है. उसको बोला जाता है द नोट डाउन दैट कीवर्ड गूगल डॉर्क्स, DORKS. गूगल डॉर्क्स. गूगल डॉर्क्स क्या है? गूगल डॉर्क्स, it's a tool that provided you the enough material about yourself. You type your name in the search bar and then find out how many times you find your name on which website, whether it is liable, not liable, legal, legitimate or not legitimate. You just find out everything. And if you have any the query, then copy the URL from there and then send to the Google Docs, Google Help Center. Google immediately within a 30 days period, Google remove that content from their website. Okay, so this is the good practice to work on that, the Google Docs. Next, please. Yes, don't fall. You are younger guys and always earning the lots of money. That is the vision of everyone. But don't fall in this kind of trap, because during the social media browsing you are getting this kind of all posters, extra work, okay, captcha filling work, data entry work, and that they're showing them that mom exposed herself, made 6 crore for the secret. अभी उसने ही कमाना था तो वो कमा लेती ना, हमको क्यों बताने की जरूरत है? 6 से 12 कमाए, 12 से 18 कमाए, हमको क्या बताने की जरूरत है? Don't fall. These are all lucrative offers. When you find the shocking news, whenever you find the shocking news on your device, whether it is on the link way or the anything way, don't do that things. If you are following any kind of these secrets of them, then you fall into the cybercrime. शॉर्टकट में कभी भी कोई आदमी करोड़पति नहीं बनता है. तो ये सिर्फ कहने की चीज है, आपको ट्रैप करने की चीज है. तो डोंट डू दैट. Okay, don't fall on this kind of lucrative offers, and always don't share your real mobile number, real Aadhaar card number with anybody. अभी सब जगह पे आधार कार्ड है. Aadhaar card is mandatory for the passport. Aadhaar card is mandatory for the SIM card activations. तो क्या करना है? मास्क कर दो. आधार को भी मास्क लगाना है. How to mask the Aadhaar? That is given on the website. UIDAI की website पे दिया है. You just remember the one keyword, because there I have the 20 minutes time. So I am not delivering that much more in the detail, but you just note down how to mask the Aadhaar. How to mask, and in your Aadhaar card there are 12 digits. So ये mask Aadhaar क्या होता है? आगे के जो 8 digit होता है उसके ऊपर क्रॉस आ जाती है. And only the last 4 digits are valid, and you can utilize anywhere in the world, okay, wherever you required to show the Aadhaar card or your Aadhaar identity. Okay, so कभी भी, क्योंकि एक ही चीज है, अभी जो ऑनलाइन लोन्स है वो लोग आपके आधार कार्ड से लोन, आप आधार कार्ड अपलोड करोगे और 2000-5000 का लोन आपको मिल जाएगा. फिर क्या होगा?
वो आपके आधार कार्ड से दूसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन लेंगे, नाम आपका आएगा, काम वो लोग करेंगे। और अभी उसका एक नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, सर को भी पता है। तो इट्स अ बिग क्राइम, सो डोंट शेयर योर आइडेंटिटी एनीवेयर। मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलता हूं, आपसे होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं, मैं बाद में पूछूंगा होगी कि नहीं होगी। हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग द 2 SIM कार्ड? Okay, almost 70%. Do one thing. Keep one smartphone and second one is featured phone. Second phone कौन सा होना चाहिए? Featured. Smartphone को हैक करना है तो there are thousands of ways, multiple ways to hack the smartphone. अभी मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, ये लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपका आईपी मेरे पास आ जाएगा, और once I get the IP, then I can do anything with anybody. So don't click on any link. If you get the link and if you wanted to open, so do the one thing. क्या कर? Do one thing. Just copy the link, then open the Google Chrome browser, then there is incognito tab, and then paste it over there, and then browse. There your IP is getting masked. तो आपका IP रिवील नहीं होगा, आपकी आइडेंटिटी लोकेशन रिवील नहीं होगी. That the things you have to do. और दूसरी चीज, जो 2 SIM कार्ड रखते हैं उनको मैं एक गुजारिश करता हूं, 1 you go with the smartphone and second device that you have the featured phone. उसकी बैटरी भी ज्यादा चलती है, 5 दिन चलती है. और दूसरी क्या चीज है कि if you have that little device, then उसको हैक करने के लिए एक ही रास्ता है. If you wanted to hack that smaller one device, there is only the one way. और जो रास्ता वो ब्लूटूथ है उसका, अदरवाइज वो हैक होता ही नहीं है, वो हैक होता ही नहीं है. तो जो बैंक का और गवर्नमेंट के साथ दैट नंबर यू आर बीइंग लिंक अप, उसका सिम कार्ड हो किस में होना चाहिए? फीचर्ड फोन में होना चाहिए. और दैट एप्लीकेशंस आप यूटिलाइज करते हो, कोई भी एप्लीकेशन वो कहां पे होना चाहिए? स्मार्टफोन में होना चाहिए. तो ओटीपी स्मार्टफोन में नहीं आती, बिकॉज देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन दैट मोटवानी सर सेड कि बहुत सारे एप्लीकेशन है वहां पे आपने उनको परमिशन देके रखी है. और आप ऐसा सोचते हो, क्या सोचते हो कि जब एप्लीकेशन यूज करता हूं मैं तभी उसका यूटिलाइजेशन होता है ना. किसने बोला? whom you put the trust? Don't trust them, because they are providing everything. They are providing each and every services, everything by free of cost. वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा इज इंपॉर्टेंट. व्हाट्सअप अगेन माय वर्ड, व्हाट्सअप बिजनेस उनके लिए इनकम का जरिया है, व्हाट्सअप इनकम का जरिया नहीं है. सो ऑलवेज गो विद द 2 mobiles, always carry the 2 mobiles, and the last thing, always carry the 2 email address. One is for the social media. Okay, it's a quite easy to switch over from one account to the another account. वो आपको पता है, it's quite easy. So always go with the 2 email address. One is that you link up with your bank, that Aadhaar card, your PAN card, your government transactions, or that passport, anything. So you don't reveal that email address with social media network. दोनों अलग अलग होने चाहिए. अभी आज से प्रैक्टिस करोगे, 1 साल तक सब चेंज हो जाएगा. मगर you just start an initiative from today, then you get it in that effective would be in the next 1 year. Okay, so ये करना बहुत जरूरी है. Then you can stop that all activity that going out. Okay, आप आपकी डिजिटल फुटप्रिंट रोक सकते हो. Okay, उसको पता ही नहीं चले आप कहां पे हो. और सेकंड थिंग, आई रेकमेंडेड ऑलवेज स्ट्रांगली रेकमेंडेड, ऑलवेज गो विद द लाइसेंस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. License. If I am asking how many of you having the Truecaller? 90%. 90, more than 90%. Okay. If I am going, why do you install the Truecaller? To identify the suspectives. But if I don't want to receive the call, that is in your hand. And then check it.
Truecaller, there you have also the one website option. Log in with the website and check the number. It is that the way is available. Why do you unnecessarily install the so many apps? There are so many garbages in your devices. कौन सा garbages है मैं बोलता हूँ लास्ट 15 डेज में आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी है मगर यूटिलाइज नहीं किया है, दैट इज ऑल डिजिटल गार्बेज. रिमूव इट, उसको निकाल दो. और हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग द इंटरनेट अनेबल फॉर 24 आवर्स? डेटा कनेक्शन ऑन कितने रख सकते हैं आप लोग प्लीज? ओके, डू वन थिंग, फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉट टुडे अबाउट द. कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, वो अगर अस्पताल में जाती है 6 महीने के बाद तो उसको क्या बोला जाता है? बहन हमें मोबाइल थी दूर रह जाए. क्यों? That is the electromagnetic what we have the large amount of peoples, large amount of users, but we have the limited source of towers, and due to that they generate the more electromagnetic what, and that disturb our mindset, that disturb our that sleeping that activity or everything. This kind of activity disturb our daily routines life. So off the internet connection and always go with the license software. Truecaller license है, आप इंस्टॉल करके रखो. Truecaller license है. और दूसरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. आई ऑलवेज प्रिफर द गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. आप सर्च करो, बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. ऑलवेज यू कीप दैट ऑल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर डिवाइस और इट शुड बी एवरी डे अपडेटेड. लाइसेंस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखो, उसको अपडेट करके रखो. और वेन एवर यू फाइंड अपडेट in your Play Store or App Store, always update the all application. That is a good practice. That is a good cyber hygiene. Okay, please next. Yes, अभी ये दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है? Whether आप ये बोलो कि इसमें how to identify whether it is a real page or fake page. आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. आपको दिख रहा है तो आप आइडेंटिफाई करो, मुझे बताओ. Yes, the one thing that the one answered, blue tick. अगर डीमार्ट का ऑफिशियल पेज होता तो वहां पे क्या होता? ब्लू टिक होता. यहाँ पे ब्लू टिक नहीं है. सेकंड थिंग द ग्रुप हियर, इट इज नॉट विजिबल क्लियरली. द ग्रुप क्रिएटेड ऑन द मंडे 24, 2021. अभी डीमार्ट कब से आया है और 2021 को क्यों बनाया? सो डोंट फॉलो ऑन दिस काइंड ऑफ लुक्रेटिव ऑफर. दे आर स्प्रेडिंग दिस काइंड ऑफ रूमर्स. आपको जब शौक लगेगा कि ये इतना सस्ता आईफोन अभी मिल रहा है इंस्टाग्राम पे, आईफोन 14 अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, बुकिंग चल रहा है और वो अवेलेबल हो गया 30,000 में. बोलो, डोंट फॉलो इन दिस काइंड ऑफ लुक्रेटिव ऑफर. वो लोग क्या बोलते हैं? पहले पैसा दो और पैसे देने के बाद वो आपको बोलते हैं कि अभी आएगा, फिर कुछ भी नहीं आता है. ओके, सो ऑलवेज फाइंड आउट द बेटर ऑफर्स एंड ऑलवेज एक ही गूगल सर्च इंजिन से हम सर्च करेंगे ऐसा नहीं है. ऑलवेज गो थ्रू द सो मेनी सर्च इंजिन आर अवेलेबल. गूगल, हॉटबॉट, अल्टा विस्टा, देयर आर सो मेनी अवेलेबल सर्च इंजिन्स वी हैव. सो ऑलवेज गो थ्रू दैट ऑल सच थिंग्स. नेक्स्ट प्लीज. यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. Nowadays, if you are listening and if you are hearing that things, so many people's Instagram accounts getting hacked. Am I right or wrong? क्यों होता है? That is curiosity. How do they create the curiosity? Sending the message, this video belongs to you and this is the special video link for you. Just tap it on it. Once you tap on that link, then that page will ask you to enter your credential. And once you enter your credential, then you lose the control of your account. And then they use that for the sextortion. They use for that promoting the bitcoins or anything. So don't fall in this kind of trap. Block it and report the things. Report is most important to stop this all kind of nonsense activity. Okay. So I always advisable, don't enter your credential anywhere. And one more thing. Now you are very well knowing about the two-factor authentication. Always go with the two-factor authentications. Whether you have the Google account, Instagram account, WhatsApp account, or any social media account that you have,
always enable the two-factor authentication, and how to enable the two-factor authentications, that is given step by step in the Google, that format. So Google it and then you get it, how to enable it. That's fine. Next please. Be conscious on every shocking and lucrative offers. अभी क्या होता है, कैसे lucrative offers को बोला जाता है, अभी जो गुजराती का मैं एक एग्जांपल देता हूं. સુરસાગર છે, સુરસાગરથી પરિચિત છો? ઓકે ફાઇન. સુરસાગરમાં આગ લાગી. અવર વડોદરા બ્રેકિંગમાં નહીં આવ્યા. સુરસાગરમાં આગ લાગી, માછલીઓ ઝાડ પર ચડી ગઈ અને બંબાઓ કેરોસીન લઈને દોડ્યા. दिस इज कॉल्ड शॉकिंग. और लोग क्या करते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं कि फोन भी करते हैं, अभी देख क्या सुरसागर में आग लगी, मछलियां झाड़ पे चढ़ गई. अभी मछलियां कैसे झाड़ पे चढ़ेगी? मगर दिस काइंड ऑफ शॉकिंग ऑफर और lucrative offers, don't follow in this kind of trap, please. Next. Yes, thank you very much. Fine. Thank you for listening me. Thank you very much.